अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हमारा 9th सेशन है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस का। और पिछले अगर आपने सेशंस को नहीं देखा तो आप उनको लाजमी देखिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और जो आने वाले सेशंस हैं उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और जो अनसीन स्टैंजा के आपके क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंजा में से क्वेश्चंस बने हुए होते हैं और आपने उनका आंसर करना होता है, उसके ऊपर भी हमारा इसी तरीके से एक सेशन चल रहा है। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसकी समरी बनाएंगे, इसका टाइटल बताएंगे आपको, और उसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम करेंगे। समटाइम्स, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो पैसेज है ये हेलन केलर की जो स्टोरी है 3 Days to See, ऐसे की फॉर्म में स्टोरी है, उसमें से ये पैसेज लिया गया है। समटाइम्स आई हैव थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी डाई टुमारो. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. We should live each day with gentleness, vigor, and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink, and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. He becomes more appreciative of the meanings of life and its permanent spiritual values. It has often been noticed that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. On the first day, I should want most to see the people whose kindness, gentleness, and companionship have made my life worth living. The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. तो सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं। तो द टाइटल ऑफ दिस पैसेज शुड बी इम्पोर्टेंस ऑफ आइज या लाइफ विदाउट आइज. So this passage tells us about the importance of eyesight. Summary हम इसकी कर रहे हैं. The writer herself was blind and could not see. She says that people often take the blessings as for granted. She says that we should live our lives purposefully and we should not ignore the beauty of day-to-day life. She gives examples of fiction stories and tries to tell that we only learn the lesson and realize the importance of blessings when we are deprived of the blessings. Then she begins telling how she will spend her time if she is given 3 days of sight. She says that on the first day of my vision, I will meet those people who have been helping me since my childhood. On her second day of sight, she plans to observe the daily routine of people in New York City. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ द एपिक्यूरियन मोटो ऑफ लाइफ. सो एपिक्यूरियस was a Greek philosopher. He gave the idea of happiness and said that it is better to live life in absolute pleasure instead of worrying for what will happen next. His motto is often concluded as a phrase, eat, drink and be merry, which means to live the life without worrying much about it. अगला क्वेश्चन है कि वाई पीपल टेक द ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड. तो इसका आंसर ये है कि पीपल टेक द ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस when the blessings are present. But when those blessings like sight, taste, health, relatives, beauty of nature are absent, only then we realize how important they are. Next question is how Helen Keller wanted to spend her first day of vegan. She wanted to spend the first day of her vegan with her family and friends. She wanted to see her teachers who taught her how to read and write. She wanted to enjoy the company of those people who helped her throughout her life. अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट मैसेज ऑफ दिस पैसेज. सो दिस पैसेज टेल्स अस दैट वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ब्लेसिंग्स दैट आर गिफ्टेड टू अस. वी शुड नेवर इग्नोर द ब्यूटी इन द सराउंडिंग्स. वी शुड लिव आवर लाइफ विद पर्पस एंड स्पेंड आवर टाइम इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग थिंग्स एंड डूइंग रॉन्ग थिंग्स. लास्ट क्वेश्चन आपका वर्ड मीनिंग्स का होता है. तो 4 वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को देख लेते हैं. इलस्ट्रेट मीन्स टू एक्सप्लेन. पैनोरामा मतलब सीन या कोई मंजर. मैलो वार्म स्मूथ. और थ्रिलिंग का मतलब होता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट. तो आज हमने 9th
हमारा सेशन था अनसीन कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर। इसी तरह से हम इसको जारी रखेंगे। 9th क्लास की मुकम्मल बुक की कॉम्प्रीहेंशन आज ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हम 10th की जो बुक है उसमें से कॉम्प्रीहेंशन भी करेंगे, उसकी पॉइंट्स भी करेंगे। देन वी विल मूव टू द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और फिर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लेलिस्ट के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को आप लाजमी चेक किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।